This is the chapter tuples, chapter number 8. It is given in my book or in new book. I think this is chapter number 11 or maybe chapter number 12. This is the last year book. Now, here, tuples are sequences. देखो, in Python, we have list, we have string, we have tuples. So all these are the sequences. Clear? Here, tuples are also a sequences that are used to store tuple of values of any type. Just like in list we can store any kind of value inside the list. Similarly, here we can store any kind of value or any type of value in the tuples. Means values are either in integer manner or floating or in the combination of integer, float, character, string, any kind of value we can store in the tuple. So tuple is nothing but it is a sequence that are used to store tuple of values of any type. Now, see here, tuple are tuples are immutable, or you know very well what is the meaning of immutable. Immutable means here written like you cannot change the elements of a tuple in place. Means immutable means not modifiable, not changeable. So you cannot change the elements of a tuple in place. If you want to change, then Python will create a fresh tuple. Python will create a fresh tuple when you make changes to an element of the tuple. It is just like a strings and list. Look this, tuple is the type of sequence just like a strings and list, but it is differ from them. Why it is differ? Because list are mutable type, but the strings and tuples are immutable type. String and tuples both are immutable type, whereas list is a type of mutable, because in list we can change element in place. Let's start topic. How we create and access tuples. A tuple is a standard data type of Python that can store a sequence of values. Sequence of values means according to the index position, like first element will store at 0th index, then second element first index, then third element second index, like this. Because here it is a part of sequence. That means here all the elements store in a sequential manner. Or values, sequence of values belonging to any type. Any type means either integer, floating point, combination of character or the string or integer, float, anything. Like see some example here, opening parenthesis and closing parenthesis. So this is the sign to identify this is a tuple. Look, this tuples are depicted through parentheses, or you can say round brackets. So these are the round brackets. Through this you can identify it is a tuple. It is a tuple. If no element is present inside the parenthesis, that means this is empty tuple. This is empty tuple. Then 1 comma 2 comma 3, so this is tuple of integers because all the values are in integer manner. Then 1 comma 2.5 comma 3.7 comma 9, so these are the tuple of numbers. Numbers, because here both integer as well as floating point digits are given, numbers are given. So this is the tuple of numbers. Then a comma b comma c, here characters are given, that means this is a tuple of characters. After that a comma 1 comma b comma 3.5 comma 0. So this is the mixed value type. Mixed value type because here character, integer, floating point number, string type value, all the types are given. That's why it is called mixed value types tuple. And last is 1, 2, 3. This is a tuple of strings. And you know very well, tuple is a type of immutable.
means you cannot modify value in their place. Means you cannot change element of tuple in place. Now see the definition, see the note here. Tuples are immutable sequences of Python that you cannot change element of tuple in place. Next, creating tuple. How will you create tuple? Creating tuple is similar to list creation, but here you need to put number of expression in parentheses. Put number of expression means number of elements, number of data you have to put inside the parentheses, or there you have to put inside the big bracket, square brackets. वहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते थे लिस्ट में, जबकि यहाँ पर आप parentheses में लिखोगे. Like 2, 4, these are the expression, you can say these are the numbers which are written inside the parenthesis. So this is a tuple. Then similarly ABC comma DEF is another tuple of string. Then 1 comma 2.0 comma 3 comma 4.0, that is tuple of numbers. And this one is last one is an empty tuple. Thus to create a tuple you write is in the form given below. Means like T equals to open bracket close bracket. That means it is a empty tuple. And then if you want to create a tuple with some values, so you have to write like this: open parenthesis, then value 1, then comma value, then comma again value, and then at last close your parenthesis. Consider more examples. Like first one, create an empty tuple. One method is simple. You have to write opening parenthesis and closing parenthesis that indicate it is empty tuple. Or if you want to create empty tuple by using tuple function, you have to write like this: tuple and opening parenthesis, closing parenthesis. That is equivalent to null, means blank tuple, or this is like this empty tuple. Means देखो इट इज नॉट अ जीरो, इट इज लुक लाइक जीरो बट नॉट अ जीरो. ये जीरो नहीं है, ये ब्रैकेट ओपन है ब्रैकेट क्लोज है. यहाँ पर ब्रैकेट ओपन हुआ है और ब्रैकेट क्लोज हुआ है. इट लुक लाइक अ जीरो, जीरो की तरफ दिख रहा है बट जीरो नहीं है ये. ठीक है. एंड देन और ये डबल कोट्स लग रहा है बट इट इज ओपनिंग सिंगल कोट्स और क्लोजिंग सिंगल कोट्स है. ओपनिंग सिंगल कोट्स एंड क्लोजिंग सिंगल कोट्स. ठीक है. यू कैन ऑल्सो क्रिएट एम्प्टी टपल लाइक दिस. तो कैसे बना सकते हो आप? नाउ नेक्स्ट इज single element tuple. Single element tuple is a tricky. Why it is tricky? Because if you just give a single element in a round bracket, then it is considered as a value like this. Look this: T equals to bracket open 1 bracket close. That means here we want to create a tuple with one value, one element. And once we want to display this, so write T only, and then you will get 1. But this 1 is in the form of number, is in the form of digit. Look this: 1 was treated as an integer expression. Hence, 1 stores an integer 1, not a tuple. देखो यहाँ पर ये 1 as an integer आ रहा है, tuple की फॉर्म में नहीं आया. ठीक है. अब सिंगल एलिमेंट को हम कैसे स्टोर करेंगे टपल में? लुक दिस: टू कंस्ट्रक्ट अ टपल विद वन एलिमेंट, just add a comma after single element as shown below. Look this: here I want to make this as a tuple. Here only one element I have, like 3. ठीक है. And we want to make this as a tuple. So what we have to write? Write your expression, integer expression like 3, then put comma at the end. क्या करना है? कॉमा लगा देना है. एंड देन व्हेन यू सी एज आउटपुट, तो टी लिखा आपने, तो आपको किससे मिल गया आंसर? पैरेंथेसिस के अंदर. दैट मींस इट इज अ टपल. और इफ यू वांट टू राइट लाइक दिस 4 comma inside the bracket, it act as a tuple. So both these way you can create your tuple. Is it clear? We have two methods. One is, first simply you have to write number and then put comma, or second method, opening inside the parenthesis you have to write number and comma. In this way you can create your tuple. If you simply want to write
number inside the parenthesis, then it will treat just like a number. Is it clear? सर पैरेंथेसिस जरूरी नहीं है? Parenthesis जरूरी नहीं है if you put comma. देखो, in this example, comma is written at the end of number. There is no need to write parenthesis. This is only for when you are writing single element, one element. जब एक element लिख रहे हो उस टाइम की बात हो रही है, क्योंकि जब आप single element लिख रहे हो simply like this inside the parenthesis, it will treat as a integer expression. नंबर वन ट्रीट करेगा, ऐसे इंटीजर समझेगा, टपल नहीं समझेगा. जबकि आप ऐसे लिख रहे हो कॉमा लगाकर, तो इट विल कंसिडर एज अ टपल. नाउ इट इज क्लियर. ओके सर. सर एक बार एम्प्टी टपल रिपीट कर दीजिए. Empty tuple. Empty tuple is just like a opening parenthesis, closing parenthesis with no element. Means no element present in the inside the parenthesis. That means it acts as a empty tuple. It is equivalent to this or this. You can also create an empty tuple, act as like t equals to tuple. Simple, you have to write tuple opening bracket close bracket. तो इससे भी क्या होगा, आपका empty tuple ही create होगा. Is it clear? Shruti. ओके सर. Next, long tuples. If a tuple contains many elements, then to enter such long tuples, you can split it across several lines given below. But at the end, you have to put closing parenthesis. That means now your tuples are over. Now the elements are over. Look this. Here, lots of elements are given inside the parenthesis. If your elements are exceeding the line, so you create, split it, or remaining elements will move to the next line. And suppose second line is also filled, then you have to create third line and fourth line like this. And at the end, you have to put closing parenthesis. That means now tuple is over. Now tuple elements is over. इसको लास्ट ब्रैकेट जैसे लगा दोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स यहाँ पर खत्म हो गए आपके. तो आप इसमें कितने भी एलिमेंट देख सकते हो. इफ अ टपल कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स, मैनी मतलब कितने भी, ये कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. नोटिस opening parenthesis and closing parenthesis appear just in the beginning and end of the tuple. Beginning में ये लगना है opening parenthesis and closing parenthesis at the end. That means it indicate from here our tuple is begin and यहाँ पर समझ में आएगा कि ये खत्म हो गया. That is end. Clear? It is clear? Yes, sir. Very good. ओके सर. Very good. Next, nested tuple. Nested tuple, it is same as nested list. If a tuple contains an element which is a tuple itself, then it is called nested tuple. Look this here, 3, 4. It is a tuple, or it is written inside the tuple. जो outer tuple है उसके अंदर लिखे हुए हैं. So this type of tuple is known as nested tuple. So here 1, 2 or 3, only 3 elements are present because 3 and 4 both count as 1. दोनों को मिलाकर एक पढ़ेंगे. ठीक है. So here T1 has 3 elements in it, 1, 2 and 3, 4. एक एलिमेंट 1 हो गया, सेकंड एलिमेंट 2 and third is 3, 4. Is it clear? यस सर. Okay. Yes, sir. Very good. Next, creating tuples from existing sequences. You can also use the built-in tuple type object to create tuple from a sequence as per the syntax below. Means through this you can create your new tuple from the existing sequence. मतलब कोई sequence दिया वहां से भी आपको tuple उठाना है. तो means if you want to split your main tuple, so you can
create your tuple like this. Look, T1 equals to tuple in bracket hello. Hello, what is hello? Hello is a string और it is passed inside the tuple function. उसके अंदर लिखा है, तो हम इस hello को कैरेक्टर में, ये देखो अभी किसमें है, स्ट्रिंग में, HELLO, hello is written in the form of string, स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है और उसे क्या करना है, कैरेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फॉर दिस वी यूज दिस टपल फंक्शन. ठीक है, तो देखो T1 जैसे आपने प्रिंट कराया तो HELLO, ये स्प्लिट हो गया ना स्प्लिट. ठीक है, तो यू कैन क्रिएट अ टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस. तो एग्जिस्टिंग सीक्वेंस यहाँ पर क्या था, हेलो था, ये एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पर, और एक नया टपल बन गया जो कैरेक्टर की फॉर्म में, लाइक दिस. लुक दिस, L equals to WERTY. This is again an existing sequence. Existing sequence means it is a type of list. देखो किस टाइप में, लिस्ट की टाइप में. Why? Because here brackets are given, big brackets are given. ये big brackets लगे हुए हैं. That means it act as a list, and we want to convert this list into tuple because this is a sequence. तो क्या लिखा है इसमें, L की जो वैल्यू थी WERTY, इसको किसमें पास कर दिया, टप्पल में पास कर दिया, एल को पास कर दिया. नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू न्यू फॉर्म एंड देन प्रिंट दिस T2, यू विल गेट अ टप्पल. देखो जो आपकी वैल्यू किसमें थी, जो वैल्यू किसमें थी, लिस्ट की फॉर्म में थी, वो किसमें आ गई, टप्पल की फॉर्म में आ गई. क्लियर, इज इट क्लियर? No, sir. No. Listen, look this first, let's see the definition which is written here. Tuple T2 is created from another sequence. ये जो T2 है वो कहां से बन रहा है, किसी दूसरे सीक्वेंस से बन रहा है. कैसे, L इज अ टाइप ऑफ लिस्ट. जो L है ये एक लिस्ट टाइप का जिसके एलिमेंट है WERTY. क्लियर, ये जो L है लिस्ट, इसको हमने कहां पास कर दिया, टपल में पास कर दिया. टपल हमारा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक सीक्वेंस को टपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. ये आपने डेफिनेशन देखी थी, मैंने लिखा क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस. सीक्वेंस इज आइदर लिस्ट, सीक्वेंस इज आइदर आपका स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी होता है, टपल होगा, और लिस्ट हो सकती है. तो लिखा है यू कैन ऑल्सो यूज बिल्ट इन टपल टाइप ऑब्जेक्ट. ये देखो बिल्ट इन टपल टाइप ऑब्जेक्ट जिसका यूज करके आपको क्या बना सकते हो, to create tuples from sequences as per the syntax below. Sequences आपको पास करना है. तो look this, in this we have sequence L. sequence का नाम क्या है, L है. क्यों, L के अंदर ये लिस्ट पड़ी हुई है. लिस्ट भी क्या होती है, एक तरह की सीक्वेंस है. इसको हमने कहाँ पास कर दिया, टप्पल नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पास कर दिया L. अब यहाँ पर पास करा तो इसकी वैल्यू किस में जाएगी, कन्वर्ट होने के बाद T2 में स्टोर होगी. एंड देन वन when you want to see this, simply write T2, you will get values. Values are same, WERTY, but it is converted from list to tuples. ये क्या हुआ, लिस्ट से टपल में कन्वर्ट हो गया. किसके थ्रू, इसके थ्रू, टपल के थ्रू. नाउ इट इज क्लियर. Yes, sir. और सर फर्स्ट वाले केस में? फर्स्ट वाला केस कौन सा है, पहला वाला, ये वाला हेलो वाला, ये वाला. Yes. देखो हेलो, हेलो इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ सीक्वेंस. स्ट्रिंग भी तो सीक्वेंस होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ऑल आर द सीक्वेंस. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करा, इस हेलो को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा है, डायरेक्टली कहाँ लिख दिया, टपल के अंदर लिख दिया, और उसकी जो वैल्यू कन्वर्ट होकर आई वो किस में आ गई, T1 में. एंड देन यू हैव टू प्रिंट दिस T1, यू विल गेट एज अ टपल. तो अब देखो जो हमने सीक्वेंस स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया था उसने उसे टपल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. इट इज क्लियर. सर वो हेलो भी तो पैरेंथेसिस में ही है पहले से. वेट, वेट अ मिनट.
T1 equals to HELLO hello. T2 is equals to TUPLE tuple T1. Then print T2. Now you got this answer HELLO in this manner. ठीक है. और अब second method. This simply you want to write like this. T1 equals to tuple inside this HELLO hello. And then print T1. You will get same result. This answer Okay, sir. as well as this answer. Either you have to write directly hello here inside this parenthesis, or second method, first you store this value in a variable and then write variable here. Both are same. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Good. Next, you can use this method of creating tuples of single character or single digit via keyboard input like this. T1 equals to tuple input enter tuples element. Okay. If you are not using this tuple, that means it will act as a string, क्योंकि इनपुट के थ्रू आप जो भी लोगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है. ठीक है. बट नाउ वी वांट टू क्रिएट एज अ टपल. तो जो भी आपने लिया लाइक 2 3 4 5 6 7, दिस इज अ नंबर, इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ टपल. टपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. व्हाई? बिकॉज टपल के अंदर आपने लिखा हुआ है इनपुट एंटर टपल्स एलिमेंट. दिस मच. इज इट क्लियर? सर टपल के अंदर तो सब कुछ आता है ना, तो फिर ये सबको कैरेक्टर की फॉर्म में क्यों चेंज कर रहा है? टपल के अंदर सब कुछ आता है तो कोट्स तो लगेंगे सब में ना. सर ऐसे स्टार्टिंग के क्या? एग्जांपल्स में तो ऐसा हाँ, नहीं था. क्यों नहीं था बेटा? सब में कोट्स लगे हैं. देखो किसी में भी देख लो आप, इसमें नहीं लगे कोट्स. कौन से वाले में नहीं लगे बताओ? क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग टपल्स में जहां नंबर लिखा है और फ्लोटिंग पॉइंट लिखा है उसमें तो नहीं लगे, सिर्फ कैरेक्टर और स्ट्रिंग वाले में लगे हैं. बेटा यहाँ पर आपने नंबर पास किए हैं ना, यहाँ आपने नंबर वाली टपल बनाई है, टपल्स ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर बनाए हैं. यहाँ टपल्स ऑफ इंटीजर बनाए हैं और यहाँ वाले में आप वैल्यू किसके थ्रू ले रहे हो? यहाँ वैल्यू ले रहे हो आप इनपुट के थ्रू. और इनपुट के थ्रू आप जो भी चीज लेते हो वो किसकी फॉर्म में आता है? बताओ किसके थ्रू आता है? इनपुट में जो आप कैरेक्टर के. स्ट्रिंग की फॉर्म में. आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, आप भूल जाते हो बार बार. देखो a इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. वन. b इक्वल्स टू इनपुट enter second number, then second number is 1 again. Then sum equals to a plus b. What is the result? बताओ श्रुति. a plus b, value of a is 1, value of b is 1, result is 1 1. 1 1. Very good. Why it is 1 1? Sir, because it is a string type. Yes, input through the input function you have to yeah, it will take input as a string type, character type. जो भी आप दे रहे हो वो string की फॉर्म में. देखो आप यहाँ कोट्स लग गए नहीं लग गए? लग गए. ठीक है. क्लियर? तो सिमिलरली लग हियर, गए. हाँ सिमिलरली हियर whatever we have to take from the input statement, इस input के थ्रू जो भी हम लेंगे वो किस फॉर्म में आएगा? स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा. तो हियर 2 3 4 5 6 7 act as a string.
ये स्ट्रिंग में, अब उसको टपल में कन्वर्ट करना है तो उसने ब्रैकेट और कोट्स सबको अलग अलग कर दिया। ओके सर। Anybody having confusion, class? Next, see, with tuple around input, even if you not put parentheses, it will create a tuple using individual characters as elements. But most commonly used method to input tuple is eval means evaluate. इससे आप evaluate कर सकते हो, ठीक है। Input as shown below. Now eval input enter tuple to be added. Tuples are think tuple you entered, tuple इसमें आ जाएगा, then you will get like this. देखो enter tuple to added, तो इसमें देखो सब कुछ आ गया। अब टू, if 2 is in the form of number, नंबर के फॉर्म में आपने लिया था तो वो नंबर की फॉर्म में आया, देखो यहाँ पे कोट्स नहीं लगे। सिमिलरली 4 पे कोट्स नहीं लगे लेकिन ए में कोट्स लग गए, ए में आपने कोट्स दिए तो इट एक्ट एज अ character, then it act as a, this one act as a string, then it act as a list. So inside the tuple you can take any type of number, character, string or sequence. Sequence means in form of list. जैसे आप इसमें इनपुट दोगे वैसे के वैसे आपको आउटपुट भी मिल जाएगा eval के थ्रू। Now next is accessing tuples. Tuples are immutable, that means non-changeable, non-editable sequence having a progression of elements. Thus, other than editing items, you can do all that you can do with list. Thus, like list, you can access its individual elements. Before we talk about that, let us learn about how elements are indexed in tuples. It is same as list. Similarity with list. Just like in list, we have forward indexing and backward indexing. Similarly, in tuple, we have both forward indexing and backward indexing. Look this, A, E, I, O, U is given. So index position in forward direction 0, 1, 2, 3, 4, and in backward direction we have -1, -2, -3, -4, -5, like this. It is same as list. Now thus, you can access the tuple element just like you access string or list elements. Means you can access elements either in list, string or tuple through their position. Position means index value. Like here you have to write tuple name and then its index position. Index position means I likha hai. That means if you are you want forward indexing, write 0, 1, 2, 3. Or if you are using backward indexing, write -1, -2, -3 like this. Or if you are passing like this tuple A colon B, that means tuple slicing. Just like list slice था वैसे tuple slicing है, ठीक है। तो it will start from index A and finished at B-1. ये start कहाँ से करेगा, A से करेगा and finish कहाँ होगा B-1 पर। Put in other words, tuples are similar to list in the following ways. First is according to length. Hmm. According to lengthwise, you can find the length by using length function. It will return number of items present in the tuple. Then similarly, indexing or slicing. Indexing, either you have to follow forward indexing or backward indexing. Look this, ti, return the item as index I. First item has index 0 or in forward direction, or if you are using backward तो minus length का मतलब जितने भी number of elements होंगे उस में माइनस लगा देना। सपोज दैट हियर इन दिस एग्जांपल 5 एलिमेंट्स तो लेंथ क्या हो गई -5। -5 तो फर्स्ट एलिमेंट को आप या तो 0 से डिनोट करोगे या -5 से।
Then Ti colon j returns a new tuple. New tuple means part of the tuple. यहां से यहां तक, ठीक है, containing the tuple object between I and j, excluding index j. Excluding index j means j को छोड़कर, उसे पहले तक लेगा, मैं j माइनस वन तक जाएगा. Similarly, I colon j colon n. Here n means step value. Step value means like by default it will increase 1, or if you are passing 2, 3, 4, so it will skip 2 element, 3 element like this. Then membership operator, we have two membership operator, one is in and second one is not in. हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, एक in है एक not in है, ठीक है. Operator works on tuples just like they work for other sequences. In operator tells if element present in the tuple or not, and not in does the opposite. Means in will return true if the element present in the tuple, or not in returns true if element is not present in the tuple. Then we have concatenation and replication operator like plus and multiply. Plus means plus operator means concatenate if both are in string, or multiply act as a replicating means number of times. Here it wants one value in integer and second value the type of tuple, then only it works. It works means multiplication operator works when you pass one as integer and second one is tuple. It is clear, this one, lengthwise, indexing wise, slicing, membership operator, concatenation, replication. It is clear to all of you? Yes or no? It is clear? Reply me. Any confusion till now? Please ask. Shruti, any confusion? No, sir. Any other? Ayush Yadav? Next is accessing individual elements. How will we access individual element? If a tuple like this, vowels equals to a, e, I, o, u, and we want to access element which present in index number 0, then we write vowels, is this is the name of the tuple, and index position 0, then it will return a. Similarly, if we write vowels 4, that means it will return last element because it start from 0 and finished at size minus 1. So 0, 1, 2, 3 and 4. Fourth index पे u मिलेगा. Similarly, backward direction minus 1 by u, and then minus 5, that is a, like this. Recall that like string, if you pass in negative index, Python adds the length of tuple to the index to get its forward direction. Then that is sixth element tuple like t minus 5 will be internally computed as t minus 5 plus 6 equals to t1. ऐसे कुछ होगा, मतलब आपको यदि यहाँ से -5 से 6 एलिमेंट चाहिए आपको, तो क्या करेगा, -5 में 6 को ऐड करेगा तो आएगा प्लस का 1, तो इट विल डिस्प्ले +1 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट विच स्टोर्ड एट फर्स्ट इंडेक्स. ठीक है, यहाँ तक आएगा. So that's all for today's class. Remaining topic we will cover next in next class. Any doubt, please ask.